हो चुकी हैं, जिसके लिए आप सबका हार्दिक आभार है। और तीसरी वेबिनार जो हमारी बायोडायवर्सिटी डे को सेलिब्रेट करने के लिए आयोजित की गई है, वो आदरणीय प्रोफेसर विनोद प्रसाद उपाध्याय, आदरणीय डॉक्टर के.एस. कमल जी, आदरणीय डॉक्टर सुपर्णा मुखर्जी मैडम, डॉक्टर शैकत कुमार बसु जी और वैद्य अभिषेक ठाकुर जी, इन सबके आशीर्वाद से बायोडायवर्सिटी our responsibility. What are our responsibilities regarding biodiversity? हम कैसे बचाएं, हम एक अच्छे नागरिक होने का कैसे सबूत दें, इन सब विचारों पर चर्चा करने के लिए मैं सर्वप्रथम आदरणीय अग्निहोत्री जी को प्राकथन हेतु आमंत्रित करता। आदरणीय अग्निहोत्री जी। धन्यवाद प्रोफेसर पवन शर्मा जी। मैं अभी प्रतीक्षा ही कर रहा था उपाध्याय जी का, लेकिन जो भी हमारे आज के अतिथि आ चुके हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद है, उनका अभिनंदन है। और जैसा कि टॉपिक में है कि बायोडाइवर्सिटी एक अपना में इतना विस्तृत विषय है जिसको हम किस रेफरेंस में देखें, चाहे वो हमारे ह्यूमन बींग्स का हो, चाहे हमारे प्रकृति का हो, हमारे जलचर थलचर और जितनी हमारी विशेषताएं हैं उनमें पक्षी संवर्ग है, हमारे यहाँ के बहुत सारे डिविजन्स हैं जो हमारी मानव सभ्यता को पुरातन समय से लेके आज तक लेके आए हैं। और बायोडायवर्सिटी के क्रम में लगातार एक नए से नई जानकारियां आज की तारीख में भी प्राप्त होती जा रही हैं। बायोडायवर्सिटी से जुड़े हुए हमारे अधिकांश इंजीनियर्स, हमारे आज के जो इस हमारे स्पीकर्स हैं, वो इसके बारे में और अच्छी सी बहुत ताजा तरीन राय देंगे। उन सबका हम बहुत स्वागत करते हैं और इन्हीं शब्दों के साथ में डॉक्टर पवन शर्मा जी को अपने आज की इस वेबिनार के अतिथियों के आमंत्रण के लिए निवेदन करता हूँ। ओवर टू प्रोफेसर पवन शर्मा जी। बहुत बहुत आभार सर आपका। मैं अपने प्रथम वक्ता विनोद उपाध्याय सर से एक बार आप बात कर लें सर। मैं अपने प्रथम वक्ता बहुत दिनों बाद, 1 साल बाद जुड़े हैं, डॉक्टर के.एस. कमल जी। स्वागत है कमल जी आपका। समय भरपूर है, आराम से आप गाइड कीजिए। कमल जी हमारे विद्वान वक्ता हैं, साइंटिस्ट ई हैं और अल्मोड़ा में विराजते हैं। मैं आदरणीय कमल जी को सादर आमंत्रित करता हूँ। डॉक्टर के.एस. कमल जी। हाँ, नमस्कार सर, धन्यवाद सर। प्रणाम प्रणाम भैया। सर, हाँ हाँ सर, मेरी आवाज आ रही है अभी आपको? हाँ, आवाज आ रही है, दर्शन नहीं हो रहा। हाँ, दरअसल असल में मैं बस में हूँ, मैं ट्रैवल कर रहा हूँ। एक बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग थी आज दिल्ली में, वो अटेंड करके मैं वापसी कर रहा हूँ। तो क्योंकि आज बायोडायवर्सिटी डे है, तो सबसे पहले साहब सबको बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं। और विशेष तौर पे शर्मा साहब को मैं धन्यवाद अदा करना चाहूंगा कि इतना अच्छा प्रोग्राम जो आयुष समृद्धि वेबिनार वो कर रहे हैं, और उसमें हमारे काफी विद्वान वक्ताओं से सुनने को काफी कुछ ज्ञान अर्जित होता है। और विशेष तौर पर आज बात करें तो बायोडायवर्सिटी डे, जो बायोडायवर्सिटी है, सर ने ने अच्छे से बताया कि कितना महत्वपूर्ण है जैव विविधता का संरक्षण, और जो बायोडायवर्सिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी बात हो रही है। तो आज प्रेजेंटेशन तो नहीं है मेरा कोई खास, बस जो कुछ मैं बातें रखना चाहूंगा। जैसे अगर बात करें, इस बार का बायोडायवर्सिटी डे है वो है बी पार्ट ऑफ द प्लान, ये थीम रखा हुआ है इसका इस ईयर का। उसके परिप्रेक्ष्य में ये है कहना कि जो इंटरनेशनली ग्लोबली अगर बात करें तो ह्यूमन मॉनिटर्ड बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क एक बना हुआ है, 2022 में अडॉप्ट किया उसको, कन्वेंशन ऑफ बायोडायवर्सिटी डायवर्सिटी, सीबीडी जिसको कहते हैं। इनका हेड ऑफिस मॉन्ट्रियल कनाडा में है। तो सारी जो पूरे देशों से ग्लोबली 196 कंट्री ने उसके जो ट्रीटी है सीबीडी की, कन्वेंशन ऑफ बायोडायवर्सिटी डायवर्सिटी की, उसको साइन किया हुआ है। तो उसमें ये है कि कैसे बायोडायवर्सिटी का जो लॉस है उसको रिकवर किया जाए जो डैमेज हो रहा है, और उसके साथ साथ में उसकी एक्सेस और बेनिफिट शेयरिंग किस तरीके से की जाए, उसके लिए एक पूरा फ्रेमवर्क बना हुआ है। इसको ह्यूमन मॉन्ट्रियल बायोडायवर्सिटी ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क कहते हैं, AMGBF।
तो ये 2021 में स्टार्ट हुआ, 2022 में बना। एक मीटिंग पहले इसकी दो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज करके एक मीटिंग होती है ग्लोबली, COP15 जो थी, पर क्यूमिंग क्यूमिंग में ही, फिर क्योंकि कोविड का पीरियड था तो वो फिर मीटिंग कनाडा में करनी पड़ी, जहाँ CBD का हेडक्वार्टर है वहां पर। तो उसके साथ में तब जाके सारी कंट्रीज एग्री की गई, ने किया कि बॉर्डर का है, वो दो टारगेट्स, पोलिटिकली चार चार गोल्स हैं उसके अंदर में। और टारगेट ये है कि 2030 तक हमारी जो 30% बायोडायवर्सिटी है उसको रिकवर किया जाए, रिस्टोर किया जाए, जो इंडस्ट्री और एज वेल इन द लैंड अवेलेबल है। और 2050 तक का टारगेट ये है कि इसका जो ओवरऑल फ्रेमवर्क है, वार्षिक फ्रेमवर्क का, कि जो लिविंग इन हार्मनी विद द नेचर, कि हम जो ह्यूमन बींग्स हैं, जो नेचर के साथ हार्मनी के साथ रहें, क्योंकि बायोडायवर्सिटी बहुत बड़ा सेट है। अगर हम बात करें ग्लोबली तो कहा जाता है कि जो 6 मास एक्सटेंशन है उस पर बढ़ रही है बायोडायवर्सिटी। एक समय ऐसा आएगा कि सारी बायोडायवर्सिटी खत्म हो जाएगी, जैसे जुरासिक पीरियड में हुआ था, जुरासिक काल में। अभी जो मेजर थ्रेट है वो क्लाइमेट चेंज का है। इसके यूएनएफसीसीसी काफी काम करती है, और हमारे देश में भी काफी काम होता है उसके ऊपर। और सब जगह कॉन्फ्रेंस पार्टी की एक मीटिंग होती है, उसमें डिस्कस किया जाता है कि किस तरीके से इसको क्या क्या एडेप्टेशन मिटिगेशन किया जाए। तो उसी तरीके से बायोडायवर्सिटी के ऊपर में भी हमारे, अगर हमारी कंट्री की बात करें तो नेशनल बायोडायवर्सिटी स्ट्रेटजी एक्शन प्लान का एक प्रोग्राम चल रहा है, जिसके अंतर्गत जो जो क्रीमिंग बायोडायवर्सिटी ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क के 23 टारगेट्स हैं, उस पर हम लोग भी काम कर रहे हैं यहाँ पर। तो रिसेंटली एक मीटिंग हमारी बहुत बड़ी भोपाल में हुई थी, एक कंसल्टेशन। उसके बाद में दिल्ली में एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई थी, रीजन का जो नेशनल लेवल का कंसल्टेशन था। और इसको जो कोऑर्डिनेट कर रहा है हमारा मंत्रालय जो है, वन पर्यावरण जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इसको पूरा कोऑर्डिनेट कर रहा है कि किस तरीके से की स्ट्रैटेजी क्या बने कंट्री के लिए। जो नेशनल बायोडायवर्सिटी स्ट्रैटेजी नेशनल प्लान है उसके अंदर पे क्या क्या चीजें आए, जिससे कि हर एक नागरिक इसमें इन्वॉल्व रहे। तो अगर बात करें जो टारगेट्स हैं, 23 टारगेट जो है, उसमें अगर सेक्शन वाइज डिवाइड करें तो मेनली 4 कंपोनेंट आते हैं। एक कंपोनेंट है कि कैसे इसको कंजर्व किया जाए, कैसे रिस्टोर किया जाए, और कैसे इसका थर्ड पार्ट आता है कि एक्सेस और बेनिफिट शेयरिंग कैसी हो बायोडायवर्सिटी। जैसे मैं बात करें मेडिसिन प्लांट की, तो अभी तो एक्सट्रैक्शन वाइल्ड से ज्यादा होता है, पर इसको हम किस तरीके से रेगुलेट करें, किस तरीके से कल्टिवेशन में लेके आए, और जो एक्सट्रैक्शन हो भी रहा है उसका सही मूल्य है, तो लोकल कम्युनिटी है, फार्मर्स है, उनको मिले। फोर्थ पार्ट आता है इसमें कैसे कोलैबोरेशन हो और कैसे इन्वेस्टमेंट बढ़ाया जाए, उस तरफ भी काम कर रहे हैं। वो जो डिफरेंट कंपनीज है उनके जो CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का प्रोग्राम वो करते हैं, उसके थ्रू कैसे उसको उसको जो बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए कैसे प्रोजेक्ट बनाया जाए। क्योंकि अभी तक का फंडिंग का सबसे बड़ा मेन इशू रहा है इसमें कि बायोडायवर्सिटी को जो लॉस हो रहा है उसको रिकवर करने के लिए कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट, कोई बड़ा फंड नहीं है। केवल ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी कुछ फंड करती है कंट्री के अंदर में, हमारे देश के अंदर में, और कुछ एक और डिजर्टिफिकेशन को रिकवर करने के लिए एक यूएन का एक प्रोग्राम है, उसके द्वारा कुछ फंडिंग मिलती है, पर एक डेडिकेटेड फंडिंग रिक्वायर्ड है बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए, वो अभी मिसिंग है। तो उसको, उससे कि कुछ कॉर्पोरेट के थ्रू और कुछ यूएन के जो फंडिंग आए, उससे इसमें बहुत तेजी से काम किया जा सके। अगर आज की डेट तक बात करें, क्योंकि मैं हिमालय क्षेत्र से आता हूँ, तो बहुत मेजर थ्रेट्स हमने रिसेंटली देख भी रहे हैं कि फॉरेस्ट फायर एक बड़ा इशू है वहाँ पर। फॉरेस्ट फायर से काफी ज्यादा बायोडायवर्सिटी लॉस होती है। और साथ ही साथ में एक साइड जो है इन्वेसिव स्पीसीज, जिसको हम कहते हैं कि अ, अ, जो हानिकारक पौधे ऐसे आ गए हैं, वीड आ गए हैं, तो बायोडायवर्सिटी को खत्म कर रहे हैं। और जो जिसका एग्रेवेशन हो रहा है, जो क्लाइमेट चेंज का कंसर्न है, क्लाइमेट चेंज भी बहुत ज्यादा है। अगर हम उच्च हिमालय की बात करें तो वहाँ पर काफी जो अल्पाइन एरियाज हैं, वहाँ पर जो बायोडायवर्सिटी जो है रिप्लेस हो रही है। जो टिम्बर लाइन की हम बात करते हैं कि वो ऊपर की तरफ बढ़ रही है, और जो अल्पाइंस के जो प्लांट्स है, बहुमूल्य पौधे हैं, कि जो हिमालय में होते हैं, वो भी लुप्त होते जा रहे हैं धीरे धीरे। बात करें जैसे कि वहाँ पर पतीस होता है, और कीड़ा जड़ी है, सालम पंजा, हाथ पंजा है। तो वो की जो पॉपुलेशन है वो डिग्रेड हो रही है काफी काफी, क्योंकि दो टाइप का प्रेशर है उसमें, एक तो कलेक्शन का प्रेशर है, दूसरा क्लाइमेट चेंज का जो है। और नीचे के क्षेत्र में बात करें तो वहाँ पर जैसे हम फ्लावरिंग, अर्ली फ्लावरिंग के बहुत सारे एपिसोड हमको मिलते हैं। तो उनकी फ्लावरिंग बहुत जल्दी हो रही है, जिससे लाइफ साइकिल पूरी चेंज हो गई है, फ्रूट्स में सीड नहीं बन रहे हैं, जिससे कि नेचुरल रीजन भी अफेक्ट हो रहा है। ये प्लांट डाइवर्सिटी का ही
बात है। तो ग्लोबल सिनेरियो ये है कि कहा गया कि करीब करीब 1 मिलियन स्पीसीज पे थ्रेट है के एक्सटिंक्ट होने का, अभी तक जो साइंटिफिक स्टडी हुई है उसके बेसिस पे। तो डॉक्यूमेंटेशन भी बहुत कम हुआ है, डॉक्यूमेंटेशन भी मिसिंग है अभी, बहुत से चीज़ के बारे में हमको पता नहीं है, पर्टिकुलरली लोअर प्लांट्स के ऊपर में। तो उसके ऊपर में भी काफ़ी काम हो रहा है अभी। तो उसमें जो अगर कंजर्वेशन की बात करें, हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं, तो उसमें जो अप्रोच रहेगी, कुछ प्रोग्राम हमारे कंट्री के अंदर चल रहे हैं, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट एक प्रोग्राम है, जो कंट्री के अंदर में, देश के अंदर में चल रहा है, जिसके अंदर में डुअल बेनिफिट है। एक तो कल क्लाइमेट चेंज के लिए वो उसको एड्रेस करता है, दूसरे बायोडिवर्सिटी लॉस में भी काफी एस्पेक्ट है, जैसे कि प्लांटेशन करना है, लोगों के बीच में अवेयरनेस क्रिएट करनी है, वो सब चीजें उसके साथ जुड़ी हुई हैं। तो बायोडिवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए, क्योंकि हम लोग जो काम करते हैं, हम लोग पर्टिकुलरली कंजर्वेशन एजुकेशन के ऊपर में काफी काम करते हैं, बच्चों के साथ में, स्कूल्स के साथ में, हर्बल गार्डन हो, स्कूल हर्बल गार्डन और प्लांटेशन प्रोग्राम, ये हम लोग करते हैं स्कूल के टीचर्स के साथ, बच्चों के साथ मिल करके। और एक सिटीजन साइंस अप्रोच का भी प्रोग्राम हम लोग करते हैं, जिसमें कॉमन पीपल जो है उनको कैसे कैसे इन्वॉल्व किया जाए बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन की एक्टिविटीज में। बायोडायवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी बनी हुई है अभी तक गाँव गाँव में, तो उनको सेंसिटाइज करना, उनको मेन स्ट्रीम में लेके आना, उस पर भी हम लोग काम करते हैं। और उसको करने की और अधिक जरूरत भी है हर एक क्षेत्र में, जैसे कि हर एक कॉमन पीपल को की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो समझे कि अगर ये खत्म होगी तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा हम पे। और वो हमने देखा भी कोविड के पीरियड में, जब ऑक्सीजन की सारी दिक्कत हो गई, ऑक्सीजन प्लांट्स लगाए, करोड़ों का खर्चा आया, और उसके बाद लोगों को रियलाइज हुआ कि क्या 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 महत्ता है बायोडायवर्सिटी की। और उसमें काफी जो मेडिसिन प्लांट्स से, पर्टिकुलरली अगर बात करें, आयु 64 मेडिसिन एक आई इसमें आयुर्वेद में, जिसमें कुबेर कसका और सप्तपर्णी और चिरायता और अपना कुटकी जो था, तो हिमालय के क्षेत्र में पाई जाती है चिरायता कुटकी। तो उनका बहुत अधिक उपयोग किया गया जो इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, और साथ साथ में जो हमारी श्वास संबंधी रोगों को के निवारण में, तो महत्ता बहुत अधिक है। पर लोगों के बीच में अवेयरनेस क्रिएट करना, लोगों के बीच में जागरूकता काफी कम है, तो उस पे सब लोगों को आगे आना पड़ेगा और आगे मिलकर के काम करना पड़ेगा। ये एक मैसेज आज के फोरम में ये देना चाहूंगा। और इन्वेस्टमेंट जितना हो सके लोगों को, अगर प्राइवेट कंपनीज भी अगर इंस्टीट्यूशंस को या छोटे छोटे एनजीओ हैं उनको हेल्प कर सकें, इसके ऊपर जो काम कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऐसे जो काम कर रही है, उनको थोड़ा थोड़ा सपोर्ट कर सकें, तो जिससे कि बायोडायवर्सिटी के गार्डन्स, हर्बल गार्डन्स, हर्बल पार्क, नेचर पार्क, बायोडायवर्सिटी रिच एरियाज को डेवलप किया जा सके। और गवर्नमेंट भी अपनी तरफ से काम कर रही है, जैसे बागडोर के एरियाज उन्होंने काफी बनाए हैं, और उसके बाहर में एक इको सेंसिटिव जोन के ऊपर में भी काम होता है कि प्रोटेक्टेड एरिया, जैसे नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, उसके बाहर की बायोडायवर्सिटी भी कंजर्व हो, तो उसके लिए एक इको सेंसिटिव जोन बनाए गए हैं, तो बफर जोन के सॉफ्ट ऑब्जर्वर के रूप में काम करते हैं। तो उस पर भी सरकार काम कर रही है। तो ये जो मुख्य मुद्दे हैं कि अवेयरनेस, और जो साथ साथ में अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है लोगों के बीच में। और क्लाइमेट चेंज का कंसर्न भी है, वो भी लोगों को समझना पड़ेगा कि इससे आने वाले टाइम में बायोडायवर्सिटी का बहुत बड़ा लॉस है। तो अभी तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा, बाकी जैसे प्रोग्राम आगे बढ़ेगा तो और डिस्कशन हम करेंगे, क्योंकि मैं अभी ट्रैवल कर रहा हूँ, तो सर मैं इतना लगता है कि इतना और चीज़ बता नहीं पाऊंगा। तो बहुत धन्यवाद अच्छा, पुनः एक बहुत बार अच्छा शर्मा जी। साहब का, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर। कमल जी बहुत अच्छा। आपकी तो जी जरूरत हमें हमेशा पड़ती रहेगी। जी अभी जी प्लास्टिक फ्री डे आ रहा है, 25 को, हाँ 3 तारीख को जी प्लास्टिक बैग फ्री डे आ रहा है। अरे जय जी हो जी जी पश्चिमी सर। सभ्यता की। हाँ भगवान वाले के क्या जी क्या बना लेते हैं। जी वाह। जी जी जी। थैंक यू कमाल साहब, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। अग्निहोत्री बोलेंगे कुछ? सोच रहे हैं, बहुत अच्छा लगा हमको, ये अच्छी बात है कि ये बहुत दिनों बाद जुड़े हैं, लेकिन इनके पास खजाना है और हमारे पास सब्जेक्ट्स का खजाना है, तो हम लोग के आपस में ट्यूनिंग बहुत बढ़िया हो जाएगी। बहुत सारे वैसे वाइटल टॉपिक्स हैं जिनमें आपके विचार आमंत्रित रहेंगे। और आज तो चलिए, मैं फिर भी इतना स्टैंड लिया कि मैंने ट्रेवलिंग में थे और उन्होंने ज्वाइन किया, और इंस्टेंटली जो आज के टॉपिक के थॉट से वो बतलाए। तो मैं समझता हूँ कि इनका योगदान हमारे अपने आईआर मंच के लिए अच्छा रहेगा। इनका हम बहुत हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। बहुत बहुत इनका धन्यवाद। कमल बहुत साहब। बहुत आभार सर, आपका बहुत बहुत आभार। मैं अब अपने डॉक्टर शैकत कुमार बसु जी को सादर आमंत्रित करता हूँ। सुपर्णा जी अभी नहीं जुड़ी हैं। अब ये
अभिषेक जी फिर शायद निकले हुए हैं, तो एक बार अग्निहोत्री सर कृपा करेंगे। मैं आदरणीय शैकत कुमार बसु जी को उनके वक्तव्य के लिए सादर आमंत्रित कर। आई वुड लाइक Thank टू you. इनवाइट डॉक्टर शैकत बसु। वेलकम। Thank you. Thank you. Thank you, Dr. Sharma. Thank you, Agniotri ji, and my gratitude to all the participants and other dignitaries and speakers present on this forum. Thank you for inviting me. Uh, Biodiversity conservation is a big challenge towards is that our global population has been increasing exponentially at an accelerated rate, and there is not much exchange or opposition to increase our land is because we have already expanded and denatured the forest and taken over and utilized them in our infrastructure, in the expansion of agriculture industry. As the human population will increase, we have to take the land. But the forest that is remaining around the world, particularly in populated parts of the Asia, Africa, and Latin America, that constitutes a huge significant part of the forest, as also human population, it is indeed a very big challenge to maintain the biodiversity across the planet because of so much of use of chemicals, the high level of pollution, and all other factors that has been impacting the biodiversity conservation. But one of the biggest threat to biodiversity conservation has been this wildlife trafficking, which has been going on at a rampant speed and has not been successfully controlled yet at this point of time. Through the great corridors that we have in India and other countries, a big beeline is happening across all these countries into one of the biggest capture of biodiversity to black market and wildlife trafficking trade is China and Vietnam, Indonesia, and some other Southeast Asian country. But the biggest market is China. With the increasing money power that China has, the population of China, who has been significantly holding money, is now transforming more and more into wild meat consumption. I mean, though China has its own poultry and livestock and other industries, but yet there is a huge demand of wildlife meat in China, particularly for food and delicacy. As at the same time, there is a huge demand of a large number of animals, particularly for use as medicine in Chinese traditional system of medicine. One of the distinct difference between Chinese traditional medicine and Indian Ayurvedic medicine has been that while Ayurvedic medicine concentrates mostly on plants, the Chinese traditional medicine is basically on animals and various parts of animal bodies. And modern researchers have indicated around the world that most of these studies and most of this medicine that is used in China from various animal parts is a hocus pocus science. It's mostly a placebo. It's mostly a traditional and cultural concept rather than a true sense of medicine. For example, rhino horn, which was extensively used in China, or pangolin scale that are extensively used as medicine, delicacy, and bringing good luck and charms in China, all are cultural heritage. They have nothing to do with science and really the treatment of the body. But the mass consumption of wildlife that's happening in China with their increased money and the increased population, these global markets, particularly operating in China, has strong support of their government covertly under the table. And in spite of all international rules and regulations, these markets are expanding. And they are pulling and dragging wildlife from all other countries into China as because there is a huge demand for these products. For example, if you look into tiger teeth, like there is a tradition of using tiger teeth as a necklace or a bangle in many parts of India among many tribal communities, where there is a womanic belief that it brings in good luck, that you become more fearless and those kind of stuff. But really, tiger teeth or powdered tiger teeth or tiger nails or testes of tiger, bile duct of snakes or bears, eyeballs of tiger, eyeballs of bear, do they have any medicinal importance, like the rhino horns? Modern researchers have indicated that they have absolutely no medicinal value as such, other than they are product of biological origin. But because of this traditional belief in that country that they are medicinally important, they are medicinally rich, the biodiversity plundering around the world is happening at an accelerated rate because there is no other country, no continent around the world
that does not have Chinese influence right at this moment. For example, you will understand the hocus pocus of Chinese traditional medicine is because, for example, jaguar, the wild big cat or the apex predator from South America is now being or the poached or killed or dead bodies of jaguar is being poached into China from South American countries. Now just look into this fact that Chinese traditional medicine during those days or hundreds or 500, 600 years back when Chinese traditional medicine was developed in China, there was no connectivity of Asia to South America. People didn't even know that there is a country called South America. So an animal called jaguar in South America, which has its own civilizations as the old Aztecs or the Incas in Central and South Americas, are completely isolated civilizations which had no connections to one another, as we could believe. Because it was long after that, during the European colonial days, when Vasco da Gama and other Columbus found South America, and there was established connectivity between these countries. Even those times, China had very little connectivity to this country. So it is unlikely that Chinese traditional medicine would have any knowledge of jaguar. But today, a jaguar, an endangered apex predator, which is like a leopard of South and Central America, are being smuggled, or their dead bodies are being, or carcasses are being transferred from various Chinese interests or various Chinese companies operating in the South American countries, killing, hunting, harvesting them, and transporting them over ships into China. Why? It is because leopards are not so easily found in China for wild harvest, or even in Southeast Asia and South Asian countries, the level of surveillance monitoring has increased, and it is not so easy to traffic dead leopard parts from various African and Asian countries anymore, because there is a lot of awareness and consciousness, and there is a lot of lock gates through which this trafficking has to be done. But it is a free flow in South America because Chinese ships which operate between China and South American countries, Central American countries, harvest this animal, either they're live babies or small animals, or these animals are being harvested as dead body products, smuggled into China through the shipping route. Now then these are grounded, powdered, made into medicine and sold at very high prices to the Chinese public under the name that this is leopard body products. But leopard and jaguar are two different species, and if we believe that leopard body parts had any Chinese traditional medicinal aspect, this jaguar was unknown to the Chinese civilization at that point. So how come jaguar could be a part of the Chinese traditional medicine? So you understand, wherever they could lay their hands on, this has been happening, that they are harvesting animals at a significant and alarming rate. For example, elephants. Previously used to know that elephant tusks were used as a source of ivory. But now the elephant tusk trade, elephant tusk ivory artwork has all been discarded around the world. Elephants' tusks around the world has been confiscated, and they have been destroyed or burned. So the market that used to support elephant tusk has gone down significantly. You may get false ivory products, which comes from whale bones or walrus bones or other Arctic animals and other, adulterations or false products that you could see in market. But true ivory trade work you will mostly see in the museum. But what has replaced the use of ivory is now elephant skin. Now you may be worried, maybe quite in a bit of a shock, that what has elephant skin to do with medicine? No, it is not used as medicine, but elephant skins are collected from across Southeast Asia. They are being smuggled into China, and then these elephant skins are just tanned, they are dyed, and they are made into beads. And these beads, colored beads of elephant skin, has become a new fashion statement in China in various provinces, and they are sold at a very high price. You could get so many synthetic materials available these days for making ornaments, including metals, semi-precious metals, and other materials available for being used in jewelry. But elephant skin made beads and then dyed has become a fashion statement in China, for which the elephants are paying by their lives. If you
you look into newspapers reports across Southeast Asia, there are innumerable reports of dead elephant bodies where the entire skin has been removed. The animals are being skinned after killing them. So now the task is no longer important. The skin of elephants have become very much a precious commodity. For example, pangolin. Pangolin is found in India, China, parts of Indonesia, Malaysia, and other countries, and in some African countries, and it's not found anywhere else in the world. The global estimation indicates that, and even IUCN and various other organizations have suggested that what do you call this? The name of this animal, I just completely lost the name. But anyways, this I just cannot remember the name, but this has been considered as the world's largest trafficked animal because their scales are being used extensively in Chinese medicine, and the meat is being used as a delicacy product. I mean, I just remembered pangolin. So there is Chinese pangolin. This animal is found in parts of Asia, including India, China, and parts of Africa. This has been so much trafficked that it is now considered as the world's largest known trafficked animal, and it's almost in the verge of extinction. This is a nocturnal animal that feeds mostly on insects and ants, and they're very harmless, very, very shy animal, which only comes up during the night. Their body is covered with scales. But somehow in China, this animal has been considered a great source of delicacy. So these animals are being harvested, stolen from other countries, trafficked, and getting into China in huge numbers. And this is almost verge towards extinction. So all these challenges that China is creating for the rest of the world, particularly with respect to this wildlife trade trafficking, because of huge illegal trade markets based on wildlife that are operating within China under the right nose of the government with their acute support, because it's $1 billion industry and the turnover is close to $1 billion, several $1 billion. And it's a huge industry, and you could understand where the raw materials are coming, where they could harvest the animals, they are growing them. The Amur tiger or the Siberian tiger is an endangered species. There is around only 400 left around in the Siberian forest of Russia. But China has been multiplying them by, breeding them in captivity. And once these animals are being born, their kids are being raised, and then they are slaughtered. And their skins and all the body parts are harvested for medicinal, Chinese traditional medicine. And this is sold in China worth several $1 million. So the industrial influence is so huge that the plundering of wildlife is going on at an astonishing and alarming rate. 3 corridors operating in India, one across the Indo-Bangladesh border, one across the Indo-Myanmar border, and one which is the Siliguri corridor that operates between the West Bengal in eastern India connecting to Tibet, Nepal, Bhutan, and to northeast India, are one of the biggest trade routes of wildlife trafficking, and all these are connected and lead to China. Whether they are mostly not going into China through the aerial route, but they are mostly getting into China through the shipping route. And because there is less chances of being scrutinized, surveying and monitoring, or the biosurveillance is very, very less with respect to the sea route transfer. So there is huge opportunity of the transfer of this wildlife into China. Now, this is where an industrial scale of level of destruction of wildlife is, serious threats to the biodiversity is happening. But in other poorer countries, particularly in Africa, the sub-Saharan Africa, Latin America, where there is acute poverty, as well as political instability, and the economy is down. The population has increased, the mismanagement of the country has been going havoc post the colonial period, and there has been mass genocide, ethnic cleansing, and all kinds of other riots and all kinds of factors that has promoted economic instability in these countries. So many people in this country do not have easy source of meal, every fair square meal every day. So they are dependent on the scanty forest resources as a part of their daily sustenance. So if you move into these countries and look into their markets, which is mostly in various parts of Southeast Asia, Sub-Saharan Africa, Latin America, and other areas, you would see
that how wildlife are being harvested, and then this is not traded, but people are using them as a source of meat, which includes bats, deers, monkeys, everywhere. Even in parts of Northeast India that I have traveled and traversed, where there is a high tribal population, there is this heavy capture of wildlife for the source of meat as a part of the delicacy, as a part of the cultural heritage. Unless these things change, these are very serious, they have very, very long-term serious impacts on the biodiversity population, is because many of these wildlife species are very slow breeders. They only breed 1 or 2 babies per year, and if they are taken away from their ecosystem, their rate of regeneration into that system is so very low that over next 10 years, many of these species are almost towards the verge of extinction unless we take very strong measures. So whether it is Africa, whether it is Asia, whether it is Latin America, all these countries in these continents, which are in the tropical, subtropical, subtemperate region and are a source of rich biodiversity, also has substantial, huge human population, and most of the human population are unsupported with a proper economy and a stable political system. So because of the instability in our economy, because of the instability in the political system, there is chaos in this country. And because people have no other resources to support themselves, because the agriculture is down, the industry has been devastated, they have unfortunately no source to sustain them other than being dependent on the forest resources. As a consequence, the scanty forest resources are being so much heavily exploited. The animals are harvested for meat, plants are harvested for selling them as medicinal plants and for other industrial purposes. Major and minor forest products are being extensively looted. And the replacement or the replanting programs or the recapture, reintroduction and breeding of animals and then reintroducing them into the wild is happening, but they are much, much at a lower level than what it is needed. So these severe challenges of wildlife trafficking, breaking down of economies, and people getting more and more dependent on the wildlife and forest are very significant challenges for biodiversity conservation. So on this day of biodiversity, when we are celebrating World Biodiversity as a part that how trying to educate public as how biodiversity is important for us, we need to remember as our non-human co-inhabitants of these planets are slowly vanishing, we are only digging our own grave. It is their turn today, but it is our turn tomorrow. So unless we secure their today, our tomorrow is also going to be very seriously insecure. But there is a lot of geopolitics involved in it. There is a lot of cross-border, cross-international border trade and involvement in it. It is not easy for just one country to walk towards and help in proper successful biodiversity conservation. Now there is an urgent need for international cooperation between adjoining countries to work together, manage their borders, share their intelligence, particularly with respect to wildlife trafficking, poaching, and other related crimes that happens in the border areas, and to restrict poaching as well as illegal trafficking through international borders. Unless this happens, and people are also extremely poor, they will continue to haunt biodiversity conservation as because we are eliminating the human factor from the biodiversity equation. Unless the humans are also taken care of and made stakeholders in the process of biodiversity conservation, it continues to be an allure, a distant dream that becomes increasingly difficult for us to protect or prevent. So with this hope, I will request everyone to think about how important biodiversity conservation is and how individually we could work towards helping in the education and awareness of biodiversity conservation, and at least raise our voice at various international forums for the irresponsible activity of many countries like China, which is causing global depletion of biodiversity at a significant alarming rate. With this, I conclude my presentation. Thank you once again to AYUSH Samriddhi and to all the dignitaries for giving me this opportunity to present my part of research and thoughts. Thank you very much. Thank you, Sharmaji. I am done with my part. Excellent. Thank you. Agnihotri. Thank you, sir. Thank you, Dr. Sekadutji. Thank you. Thank you. Wide coverage given by you regarding the biodiversity and also the instructions
or guidelines how to protect. It's very necessary. It has become necessary in the present scenario that these should be protected by all means, and every individual's contribution is very important. Thank you so much. Thank you. Now I will try and call and see if Professor Mukherjee has returned. Oh, yes, I think she has joined us. Thank you very much. Yeah. She has joined us. Yes. So, she is very kind enough. Madam. Yeah, she has been traveling from a long distance today, so I am very thankful that she has been able to make it today. Thank you so much, Professor Mukherjee, for joining us. So, I am again coming to Kolkata on 28th. Okay. We'll definitely meet this time. Yeah, thank you. Madam Suparna Sanyal Mukherjee. Thank you very much. Just now I have reached at home. So it's very nice that you have included me in this session. So I would like to, today is the World Biodiversity Day. On this auspicious day, I can say on the topic of biodiversity and Anthropocene, perspectives and policy. Basically, biodiversity we are following since time immemorial. But there was a policy, there was no such policy which can be made around. But there is a policy, the natural policy has coincided. And following up for this particular aspect. So the biodiversity, which we can emphasize on the particular aspects of the Anthropocene, like the awareness of the scale and rapidly of biodiversity loss, the growing capacity, as to so to has to be appreciation of the many ways that the biodiversity supports the human well-being, either in the directly or indirectly. When it has been directly appreciated, that is the ecosystem, eco-policy, eco-development, eco-conservation, such and such. And when it is the indirectly, it is the, if we can protect the ecosystem and eco-variety, then we can protect the human life and human being, the plant kingdoms, animal kingdoms, everything. So the imperative of conserving this biodiversity, so especially there are so many public policies are there, and the PPP, that means public-private participation is also there. The NGOs involvement is also there. So when we can make our involvement in this public relationship and the public policies, the imperative conserving biodiversity has been expand the multiple aspects, the multiple sectors, from governments to the academia to environmental and development, non-government, such and such. There is a target area. The repeated efforts had been made the target year of 2020, when the achieved targets. That means they have been targeted the 2030 is the international commitments of the biodiversity collaboration and expansion, of which we can develop the sustainable development goal. Sustainable development goals is today's main aspect. That is, sustainable development goals is four is the main specific factor for this maintenance of this biodiversity. There are the 17 characteristics of the sustainable development goal, of which 2 and 3 is very important for this protection of this biodiversity. How this is, we can make it a chart, like if we can control, or if we can correlate it with the eco-conservation, at the same time the correlation coefficient, we can make the strata orientation. How the strata orientation? First strata, the base strata is be the ground level strata, which is the biodiversity maintenance. After this biodiversity maintenance, we can develop the biodiversity services. Then the biodiversity services, we can go to the function and prospects. Then the first function and prospect to ecosystem, the eco services.
Afterwards, the value of the biodiversity to maintain the value intrinsically and the direct indirect process. Then we can make the human development by which we can implement the policies. This policy making system can develop the human well-being and human perspectives, where we can develop our richness in that sense, the richness of well-being. So sustainable development goals can give us the richness of well-being. In this perspective, probably we can say that the fitness of human being and the development of the bioecosystem, of which we can develop and we can enrich our mother earth to some extent. That the concept is putting the monetary and the monetary price also, because the global sustainability is also enhancing the monetary policy at the same with the enhancement of the eco-conservation and the monetary system, where we can disinteracting the biodiversity effects from the physical and the emotional level, but we have to prove and we have to give him the feedback of the ecosystem, which has been much more difficult the initial practices, but it is very important and very essential for us to betterment of the life sustenance. The implication of this matter, this Anthropocene, which has given us the particular framework of the human being, because it is the connected with the eco-conservation, eco-sustainability, eco-diversification, eco-orientation, eco-system, and eco-naturality and maintenance of eco-development. And this feature has given us the more protection and the restoration of the plants and animal kingdom. And this way we can develop the sustainable goal of the bioconservation. And this measuring of the pretending effects of the anthropogenic activities on the values of biodiversity, a major criticism has given us a valuation approach to conserving the biodiversity in the case of the current research, which is saying that if we can protect and if we can develop our forestry and biodiversity in the sense of the 33% of the total land area, then only we can protect our earth system in a sustainable manner or in a scientific manner. As mentioned, and as we can develop and as we can enhance in the biodiversity protection and life sustainability, the Anthropocene is very important for that, for making the human being, the human species, and influence ecosystem and eco-balance in such aspects where we can develop our sustainability and daily livelihood sustenance, especially the tribals, those who are living in the dense inside the forest, then the forest fringe and the outside of the forest, they also can develop their sustainable goal to the development of the biodiversity, which can link us the particular scientific framework at the same time the scientific evolution on this aspect. Thank you very much. Thanks for us. And in all cases, the AYUSH has the particular involvement, because AYUSH have the impartation of basic consciousness of the biodiversity, because everywhere if we can develop the AYUSH, we can develop the medicinal plants which have the direct impact, direct probabilities and possibilities in case of the human being and the plants and animal kingdom. Thank you. Thank you very much for giving us such opportunity to say something on this auspicious day. Thanks a lot. Thank you, sir. Thank you very much, madam. Thank you very much. आज का बायोडाइवर्सिटी डे आप लोगों ने मनवा दिया अच्छी तरह। कितनी गजब बात है कि इसी महीने में अभी 3 दिन बाद प्लास्टिक फ्री डे है, उसके बाद 3 जुलाई को प्लास्टिक बैग फ्री डे। मतलब क्या क्या नहीं है, भगवान मालिक है। थैंक यू अग्निहोत्री। Thank you, ma'am. You have made a very clear line over the discussion on biodiversity concept, and you also alerted us all that being a very important point, this topic is to be considered seriously, and it may be the human being who can protect
all the such type of lives which are endangered, and moreover, medicinal use should also be taken care of, because life is very important, may it be of human life or the animal life. In that way, after life, the items are there which can be used, that too under the purview of the government and the permission. Then we will in position to say that we are not hurting our biodiversity, and we are taking the best use of it and contributing ourselves, our life for their life. Thank you so much, ma'am. Thank you. जी सर. Dr. Tejinder ji is here. He will like to say something. He didn't. Yeah. Dr. Tejinder ji. Because it is already 11, so I think we have completed our journey. Very hectic journey, having lot of developments, and persons attended by us on different topics. I think that you were telling about the 30th May, Dashera Day. That is not Dashera Day. That is last year, I think. It is 23rd of June. Because the date will be started on 23rd. कल पूर्णिमा है. कल इसकी पूर्णिमा है, तो लास्ट ईयर इस साल आएगा 23 जून को, शायद 20 है 23 जून.